Good morning everyone. So as you know that we are discussing about the trends in modern periodic table, and the new trend is metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character is also known as electropositive and electronegative characters respectively. So what are metallic character? Basically it is a property of an element that tend to lose electron, and non-metallic character, it is a property of an element that tend to gain electrons. So some element which have a tendency to lose electron, they become positively charged, and those element which have a tendency to gain electron, those become negatively charged. So this is metallic character means electropositive character, and non-metallic characters means electronegative character. So in today's topic we will discuss that how these character, metallic and non-metallic characters, will change in a period from left to right and in a group from top to bottom. So what happened in that case? Basically, as you know that elements in the modern periodic table, they are arranged on the basis of their increasing atomic masses, and here I have taken the example of third period. In this third period, these elements contain 3 shells, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, everyone contain 3 shells. So elements contain 3 shells, and hence electrons are arranged in these 3 shells. That's why they are present in the third period of the modern periodic table. So as we can see that the nuclear charge increases in a period when we move from left to right, like it contains 11 atomic number, 12 atomic number, 13, 14, 15, 16, 17. So nuclear charge increases, and when nuclear charge increases, then we can observe that the left side of a table contain metals and the right side contain non-metals, and some elements has a property that contain both the property of metal as well as non-metal, and those are known as metalloids. So what happened when we move from left to right? Then it is easily seen that metals are on the left side, non-metals are on the right side. So metallic character decreases and non-metallic character increases. Basically, as I told you, metallic character means ability to donate electrons. So these 3 are metals: sodium, magnesium, aluminium. But which one can easily donate electron? That is a good metal. So in we can see here that there is 1 electron that is to be donated, there are 2 electrons that are to be donated, 3 electrons that are to be donated. So out of these 3, which can easily donate electron, that is a good metal in comparison to the another one. So in the case of sodium, sodium has 1 electron, and on this 1 electron, the nuclear charge provide comparatively less force in comparison to the magnesium. It contains 2 electrons, so nuclear charge provide more force on the outer 2 electron of the magnesium. So it is difficult for magnesium to donate 2 electron in comparison to the sodium to donate 1 electron. So sodium अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर पाता है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम. और अगर आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन देखो, सो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली ईजिली डोनेट कर पाता है. सो व्हाट हैपेंड इन दैट केस? सोडियम सबसे ईजिली डोनेट कर पाएगा, उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम एल्यूमिनियम. तो हमने तो ये डिस्कस किया कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो मेटल हैं, और जो जितनी ईजिली डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटल है, उतना एक्टिव मेटल है. सो वी कैन से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी कैन राइट हियर दैट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एंड एज वी मूव then we can see
that non-metallic character increases. We can see again here that phosphorus require 3 electrons, sulfur require 2 electron, chlorine require 1 electron. So it is easier for chlorine to get 1 electron in comparison to sulfur, and it is easier for sulfur to get 2 electron in comparison to phosphorus. आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं एटॉमिक साइज से, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. तो क्योंकि एटम का साइज धीरे से डिक्रीज हुआ, सो व्हाट हैपेंड इन दैट केस कि एटम का साइज, अगर एटम का साइज डिक्रीज होता है तो ये न्यूक्लियस से लगने वाली फोर्स, जितना बड़ा साइज होगा उतनी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी. तो क्योंकि एक पीरियड में एटम का साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स बढ़ती जा रही है. तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये इजी हो जाएगा. सो एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. सो फाइनली वी कैन से that in left to right in a period when we are moving from left to right, metallic character decreases and non-metallic character increases. It is due to increase in the effective nuclear charge, क्योंकि nuclear charge increase हो रहा है, so that's why. Now we can take an example of group also. I have taken 2 example of group. One is of metal and one group which contain non-metal. So in the case of metal, as we can say that shells increases, and because the shells increases, so the distance from center to the outermost shell also increases. And when the atomic size increases, no doubt nuclear charges also increases, but when the atomic size increases, then the force applied by the nucleus on the outermost electron is also decreases. क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो कम होगी, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली बी डोनेटेड. सो इन द केस ऑफ अ मेटेलिक कैरेक्टर, इन द केस ऑफ अ ग्रुप, when we are moving from top to bottom, then we can say that metallic character increases. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे चलेंगे, मेटल के ग्रुप में आगे चलेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स कम हो रही है थ्रू बाय द न्यूक्लियस. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन, आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 17. ग्रुप 17 में सब नॉन मेटल्स हैं. So what happened here? Again in a group atomic size no doubt increases, लेकिन atomic size बढ़ने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेना है तो न्यूक्लियस से एक फोर्स लगनी है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी बाहर से. In that condition, because the size increases, so the nucleus which is present at the center, उसकी force of attraction outer side कम लगनी शुरू हो जाएगी और वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. So in the case of group, when we are moving from top to bottom, the non-metallic character, it will decreases. So again, I am giving a kind of summary of this lecture. In a period, metallic character decreases and non-metallic character increases when we are moving from left to right. It is because the nuclear charge increases, or we can say the atomic size decreases. In the case of group, in the metallic group, the metallic character increases because the distance from the center to the outermost electron that is to be donated. So the distance from the center to the outermost shell increases. And in the case of non-metallic character decreases. Again the reason is same. Non-metallic character decreases means the ability to gain electron decreases because the size increases. That means वो जो न्यूक्लियस से फोर्स लगनी थी वो न्यूक्लियस से लगने वाली फोर्स
अब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज द last trend in the modern periodic table. I hope you understand. If you have any kind of problem, you are free to ask about that. Have a nice day. Goodbye.